So we learn about Faraday's laws, and they come under the topic that is quantitative analysis of electrolysis. So write the topic, write the topic. Quantitative analysis. Quantitative analysis of electrolysis. Okay. Now, all of here you will be learning about Faraday's law of electrolysis. Okay. So write the first law. First law. Like the mass of chemical substance. The mass of chemical substance deposited or liberated at an electrode is directly proportional to the current passed and time. Okay, and time. Okay, so see what it is telling, it is directly proportional. So mass, that whatever you are having, mass of chemical substance that gets deposited or liberated at an electron is what directly proportional to the current passed. Okay, so current means the quantity of charge that is getting passed. Okay, so this will be directly proportional to what? This will be directly proportional to Q, that is charge. Okay, and M, it will be directly proportional to also time. It will be also directly proportional to what? It will be directly proportional to time. Now, I is equal to I, that is current, that is what? Charge upon time. Yes or no? This charge upon time. So now when I have to write this, I will put up a equality sign, and then I will put up a constant that is known as Z. Then what do we have here? Z into and we can write this, wait a second. Oh, Q I have written here, it will be I, okay, the current passed, proportional to the current passed. Okay, so here M is equal to what? Z into IT. Okay, Z into IT. Z into IT. Okay, and also you can write M is equal to what? Z into IT will be equal to Q, that is equal to charge. Okay, so IT is M is equal to Z into Q also. Q means the charge. Now, what is the Z here? Please write about Z. Let me write about other things also. I is current. T is time.
Z is equal to, Z is known as electrochemical equivalent. It is a constant. Electrochemical equivalent. How do we get the Z? Z is equal to equivalent mass divided by the Faraday's constant. Which is equal to equivalent mass. We represent this as E, and Faraday's constant we represent as F. Okay. The value of Faraday's constant is equal to 96500 coulomb. Okay, so this is what Faraday's constant is, the charge of one mole of electron. That means it is, how we got this number 96500? We have got this by multiplying 1.6 into 10 to the power minus 19. This is the charge on one electron into 6.022 into 10 to the power 23. So when you multiply this one, then you will get 964,798 something. So we approximate it to 96500. Done everyone, is no? देखिए आप लोगों ने फातिमा and Mariam. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now write electrochemical equivalent. Let us look what it is. Electrochemical equivalent. Okay, electrochemical equivalent. Please write. It is defined as the mass deposited or liberated when 1 coulomb of charge is passed through electrolyte. Okay, so if I have Q is equal to 1 coulomb, and we know that M is equal to what? Z into Q. Q is equal to 1 coulomb. M will be equal to Z into Q, which will be equal to what? Z. So it is the mass deposited when the coulombic charge is when 1 coulomb of charge is passed, when 1 coulomb of charge is passed through electrolyte. Done everyone, yes, no, please tell me. Yes, sir. Okay. Get a question. Calculate the charge required
to produce, calculate the charge required to produce 2 moles of I2 from Ki. 2 moles of I2 from Ki. So see, first of all, we will see, you don't have to write any type of chemical reaction. But what you have to do, you have to write what is the initial thing and what is the target thing that you have to form. Okay, so please see and don't write anything. I have to go from Ki and I have to form what? I2. Okay, I have to form I2. Now, what we are going to see here is, first of all, what is the oxidation state of iodine here? So potassium is what element? Group 1, group 2, group 3. कौन से group का element है? Potassium is from which group? Potassium is from which group? नहीं याद. You guys don't remember the periodic table, Fatima, Mariam, at least group wise? अरे हाँ ना बोल दीजिए, yes or no? No, you don't remember? Oh, Fatima, Mariam, do you remember? Fatima, no. Mariam, what about you? Mariam, are you there? Can't hear you. Fatima, तो आपको like you don't know any group. Fatima, can you please turn the mic on? Yes, sir. हाँ बताइए, आपको कोई भी ग्रुप नहीं याद है या फिर मतलब कुछ ग्रुप्स याद है, ठीक से नहीं याद है? नहीं याद है. अच्छा, कुछ भी नहीं याद है. लीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर. You have not heard of these things? Sir, what did you say? हाँ छोड़ दीजिए, नहीं सुना आपने. What about Mariam? Do you remember थोड़ा थोड़ा anything या नहीं? बिल्कुल नहीं. No, sir, I don't remember. अच्छा, you don't remember. ठीक है, fine. So as of now, what you will see, अभी आप मान के ये चलेगा, this potassium is from group 1. Group 1, it has the ability to give 1 electron. So this is having a oxidation state of +1. Iodine will have oxidation state of -1. Now, when iodine is bonded with iodine, iodine is bonded like this with iodine, है ना? Both of them have same electronegativity. That means electrons will be just in the middle. So none of them will have any partial charge. So the oxidation state here is equal to 0. Oxidation state here it is equal to 0. Now we are going from -1 to 0. Yes or no? We are going to from कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? -1 से 0. Is that right? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, So sir. how many electrons? कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा? How many electrons will get transferred? Tell me. If I am going from -1 to 0. 1 electron. 1 electron transfer, right? 1 electron transfer. यानी कि if I have to make 1 mole of I2, I have to give 1 mole of electron. वहीं अगर हमको यहाँ पे देखिए क्या पूछा इन्होंने? Calculate the charge required. So Q will be equal to how many moles of I2 do you want to make? You want to make 2 moles of I2. I want to make 2 moles of I2. Now one more thing you have to remember. If I will have 1 I, then I will be getting only half I2. है ना? So here you can see that to make 1 mole of I2, make 1 mole of I2, I require 2 electrons. यहाँ पे you can see that here it is -1, here it is I2. So I have only 1 iodine. Okay. So when I do 2 Ki forming I2, then I will have how many electron transfer? I will have 2 electron transfer. Yes or no? Yes, sir. And we require 2 moles. So 2 mole is required into the number of electron that is getting transferred to make 1 mole is equal to 2. Okay. And then into Faraday. So this is the charge that you are required. So this will be equal to how much? 4 Faraday. Okay. This is equal to 4 Faraday.
Done, yes or no? Tell me. Yes, sir. Okay. Now, so this is the most complicated question that you are going to get. Okay. Whatever answer, whatever question you are going to get, they will be easy. So see, start here. Get a question. Calculate the charge required in terms of Faraday for the following. One mole of Al3 plus to aluminium solid. 1 mole of Cu2 plus to copper solid. 54 grams of Al from Al2O3. 20 gram of calcium from calcium chloride. 1 mole of MnO4 negative to Mn2 plus. Write this down and tell me the answer for the first one. I hope the first one is going to be easy. क्या करना है आपको? First of all, the first thing, whatever these steps are, please remember these steps. You have to go from Al3 positive to Al. पहले सबसे पहले ये लिख लीजिए. And you need how many moles? You need only 1 mole. Okay, well, you need only 1 mole. 1 mole of Al3 plus will give me 1 mole of Al. That is correct. So Q will be equal to what? Q will be equal to 1 mole of Al is giving me 1 mole of Al3 plus is giving me 1 mole of Al. So this will be equal to 1 into how many moles do we require? We require 1 mole. So 1 mole of Al3 plus. And how many electrons are required? We required 3 electrons into Faraday. कितना आ गया? 3 Faraday. वैसे सेकंड वाले को बताइए कितना होगा? For the B1, how many Faradays? 2 Faraday. Fatima, for the B1? Yes, Fatima. 2 Faraday, है ना? देखिए, अब now look at the C1. C case में what you have been given, यहाँ पे देखिए all of things were in both, that is why it was very easy. Now you have here 54 grams of aluminium. So first of all, in the C question, what we will be doing? C question, we will be converting this 54 gram to number of moles. Number of moles in 54 grams of aluminium is equal to given mass divided by molar mass. ठीक है? Now, what is the molar mass of aluminium? नहीं पता. Given mass is 54 grams, molar mass is 27 grams per mole. ठीक है? This will be equal to how much? 2 moles, yes or no? (54 upon 27), how many moles? 2 moles, right? Yes, sir. What they are saying. Now we will change the question. 54 grams of aluminium is equal to 2 moles of aluminium. So we require 2 mole of aluminium from Al2O3. From Al2O3. अच्छा.
देखिए oxidation state, you have to know how to calculate the oxidation state. Okay, so the oxidation state of aluminium here, it is equal to what? X and 2, because here we have 2 aluminium, plus 3 into, for oxygen it is -2, so 3 into -2, this will be equal to, completely equal to what? 0, because it is neutral. So 2x minus 6 is equal to 0. 2x is equal to 6 and x is I equal to didn't 6 by 2. understand how you're calculating the oxidation. ये नहीं आ रहा आपको? लिखिए आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में लिखिए। फातिमा, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने आता है? नहीं आता है? नहीं. No. But you remember there was a chapter redox reaction in 11th standard, yes or no? Yes, sir. So this is expected, okay? Calculation of oxidation state. देखिए 11th क्लास के कुछ चैप्टर्स ना बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए। आई एम टेलिंग यू विच चैप्टर्स। क्वांटम नंबर्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर्स, देन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में यू हैव ट्रेंड्स, साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी and electronegativity. All of these trends, and also the group 1. You should remember what is group 1, group 2, then group 3 से लेके 3 मतलब 13 से लेके group 18 तक. You should memorize this thing: group 1, group 2, group 13 and group 18. Okay. After that, chemical bonding. Chemical bonding में topics are hybridization. You should be very much clear. What is hybridization? Shape and geometry. मतलब you cannot afford to forget these things. इतना important है ये. Okay. Then we have from redox reaction how to calculate oxidation state. अब ये भी ध्यान रखिए, for oxidation state you will be requiring group 1, group 2 के बारे में. Okay. Okay. ये टॉपिक्स को लिख लीजिए तो आप. लिख लिया आप लोगों ने? नाउ लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके. First case, if you have ion, so oxidation number or oxidation state, it is equal to charge on the ion. Okay, charge on the ion. For example, Al3 plus, Na plus, Cl negative, Mg2 plus, what else? तो what बताइए, Al3 plus में क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? 3. +3 है ना, प्लस साइन के साथ होता है ऑक्सीडेशन नंबर. Na प्लस में +1. +1, Cl नेगेटिव में -1. -1, Mg2 प्लस में +2. +2. ठीक है, तो ये केस तो सिंपल था. नेक्स्ट देखिए कंबाइंड स्टेट में कैसे होता है केस 2.
case 2, number 1 rule. Elements in wait a second. Atoms in elemental form. Atoms in elemental form always have oxidation number is equal to 0. Okay, oxidation number is equal to 0. क्या मतलब elemental form में? Elemental form का मतलब होता है what is the first atom, first element in the periodic table? Tell me, Fatima Mariam. First element कौन सा है periodic table में? फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? अरे भाई फर्स्ट एलिमेंट नहीं पता है? नहीं माइक ऑन, हम चार्ट नहीं देखने वाले, बहुत टाइम लगता है चार्ट में. कैन यू माइक ऑन एंड टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट? हाँ बोलिए मरियम. हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. हाइड्रोजन किस तरह से मिलता है हम लोगों को यूनिवर्स में? व्हाट इज द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन डू वी गेट हाइड्रोजन? हाँ H2 ना, तो यही होता है एलिमेंटल फॉर्म. ओके मरियम, यू गॉट दिस? यस और नो? टेल मी. H2, Cl2, O2, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड और ग्राफाइट, है ना? सो वी गेट दिस इन नेचर, प्योर कार्बन ऐसे मिलता है हम लोग को. सिमिलरली phosphorus we get as P4, sulfur we get as S8. okay, helium कैसे मिलेगा? helium we will get as He only. ठीक है. Similarly ozone में भी, even if you talk about ozone, O3. ठीक. So these are the pure states that we have. So in all of these states you can see that H2, there are 2 atoms here, but still both of the atoms they will be having oxidation number which will be equal to 0. The oxidation state will be equal to 0. Got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक, उसके बाद लिखिए. अब यहीं पे आपके पास ना देखिए दिक्कत कैसे आएगी. You have atoms in the combined state. What you will have? Atoms you will have. अब आप atoms को क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग केसेस में. So first thing is if the atom is hydrogen. ठीक है, atom क्या है आपके पास? Hydrogen. Then it is what? Generally -1. But when it is bonded with metal, metal and hydrogen का bond होगा, then it will be what? Sorry, generally it will be +1. metal and hydrogen के साथ इसका -1 होगा, हाइड्राइड होता है. ठीक है. So for example, if you have lithium hydride, so यहाँ पे lithium का हो जाएगा +1, हाइड्राइड का कितना हो जाएगा? -1. ठीक है. You got this? Yes or no? Please tell me. Next case है आपके पास, if it is oxygen, then oxygen it is always -2. But in peroxide it will be -1. Superoxide में it will be -2. Sorry, -half. Generally it is -2. ठीक है, हमेशा -2 ही लेके चलिएगा. Then fluorine does not have any exception. It is always -1. If it is group 1 का एलिमेंट का +1 होगा. If you have group 2 element, it will be +2. If you have any other halogen, then it will be always -1, except in
interhalogen compounds. इसको लिखिए, फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एक दो का। ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हम लिखा देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। डन फातिमा एंड मरियम, yes or no, please tell me. Yes, sir. Yes, sir. देखिए ग्रुप 1 के एलिमेंट्स लीनक, रब कसफर, लीनक, रब कसफर, डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन इसको 10 बार बोलिए याद हो जाएगा। ग्रुप 2 बेमग का सर बड़ा, बेमग का सर बड़ा। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट लिखिए। अब कैलकुलेट करते हैं, है ना। क्या था हमारे पास सवाल? Al2O3, ठीक है। यहाँ पे देख के बताइए, यहाँ पे देख के बताइए आपके पास किसका किसका पता है। यू नो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड हैलोजन, ठीक है। एल्यूमिनियम तो उसमें नहीं आ रहा कहीं पे भी। सो एल्यूमिनियम के लिए व्हाट वी विल टेक द एल्यूमिनियम एज 2x, ठीक है। दो एल्यूमिनियम है, ईच ऑफ देम विल हैव चार्ज दैट इज x प्लस there are 3 oxygens and each oxygen has how many charge? Tell me what is the charge on each oxygen? What is the oxidation number on each oxygen? लिखा है जो बताइए। जनरल कैसे है? जनरल फातिमा मरियम जल्दी बताइए भाई, अभी तो लिखा है आप लोगों ने ऑक्सीजन के बारे में। 0. 0? बिहार से आई हैं क्या आप? -2 लिखा है ना हमने, 0 लिखा है क्या? Sorry, -2. लिखा है कि नहीं आपने -2 फातिमा? Yes, sir. फिर 0 क्यों बोल रही हैं आप? 3 इंटू -2। ओवरऑल कितना चार्ज है Al2O3 में? कोई चार्ज दिख रहा है आपको? कैन यू सी एनी चार्ज? No, sir. नो, तो 0 चार्ज है ओवरऑल। ओके, सो नाउ यू कैन कैलकुलेट। अब समझ में आया कैसे करना है? जल्दी लिखिए जल्दी। कैलकुलेट कीजिएगा आप इसमें FeO में 2x क्यों लिया है प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ध्यान से कीजिए ये सब। 11 आपने 11th क्लास में किया ही नहीं है क्या ये? फातिमा एंड मरियम प्लीज टेल मी ना, मतलब किया ही नहीं है आप लोगों ने। फातिमा Sir, किया था, but then it was online, so we didn't pay much attention. अच्छा ओके। फातिमा व्हाट अबाउट यू, आपने किया है या किया ही नहीं है? किया था, but same thing. ठीक है, आया या नहीं आया ये बताइए तो हमको। बहुत इसमें फिर ना ये होता है कि मतलब अगर आपने 11th क्लास में किया होता, भूल गए होते तब तो ठीक है। ये समझ में आ रहा है सब कुछ, एक एक स्टेप। ये 2 क्यों है यहाँ पे, ये x किस लिए है यहाँ पे, ये 3 क्यों है यहाँ पे, ये -2 क्यों है यहाँ पे, सारी चीजें समझ में आ रही हैं फातिमा Sir, एंड मरियम? 2x बताइए। और 3 नहीं, 3 पता चला, but 2x नहीं पता चला। 3 क्यों है बताइए, 3 क्यों है?
बिकॉज O3 का 3 उधर है। अब 2 कहाँ से आ रहा है? सर आपने क्या बोले? 2 कहाँ से आ रहा है फिर? सोचिए, Al2 का 2, है ना, Al2 का 2 समझ में आ गई? फिर X। हाँ, असल में देखिए ना, एल का तो नहीं पता ना हमें, देखिए हमको बस इतना ही का पता है। आई नो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम तो उसमें से कहीं किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है। हाइड्रोजन पता है आप लोग को कौन कौन से होते हैं, फातिमा एंड मरियम? लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए। फ्लोरीन तो लिख लिया आपने, फ्लोरीन हाइड्रोजन में आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। बहुत रूल आएगा केमिस्ट्री, अगर आप लोग का 11th अच्छा नहीं है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आप लोगों को। लेकिन मेन यही है, you should know the elements, at least some elements, group 1, group 2, group 13, 14, 15, 16, 17 and 18, इन सब में जितने एलिमेंट्स वो आना चाहिए। फर्स्ट सीरीज ऑफ द टी ब्लॉक वो आना चाहिए। नाउ यू गॉट इट राइट एज एक्स, यस और नॉट, टेल मी। यस सर। ठीक है, चलिए अब ये बताइए, यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट है, आयरन एंड ऑक्सीजन। इनमें से हमको किसका पता है ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का। तो अब क्या करेंगे, आयरन के लिए क्या लेंगे, एक्स ले लेंगे हम लोग, है कि नहीं? यस। फातिमा, मरियम, समझ में आई यस। बात? यस मरियम सर। जी जी। कीजिए, निकालिए कितना आ रहा है इसका, आंसर दीजिए चैट में। फातिमा साइन लगा के भेजिए, ठीक है, ऑलवेज पुट अप अ साइन फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। मरियम वेटिंग फॉर योर आंसर, सेंड इट टू, हाँ ठीक तो भेज दिया, चैट में भेजिए मरियम। व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe? मरियम वेटिंग फॉर योर आंसर, क्या हो गया? मरियम नॉट हियर। चलिए, x plus minus 2 which will be equal to 0, so x is equal to plus 2। नेक्स्ट लिखिए KMnO4। यहाँ पे किसका नहीं पता हमको, मरियम एंड फातिमा, टेल मी, डू वी नो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम K? फातिमा यस और नो? यस सर। अब मरियम आप आंसर क्यों नहीं दे रही थी, आपसे हम इतना देर से पूछ रहे थे कि Fe होगा, क्या होगा सर आंसर? मेरा नेट लैग कर रहा था। आई कैन हियर अच्छा सम थिंग्स एंड सम नॉट। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके ठीक है। तो मरियम एंड फातिमा, पोटेशियम का पता है हमें, यस और नो? यस। मैग्नीज का, Mn का पता है? नो। ऑक्सीजन का पता है? यस। ठीक है ना, तो मैग्नीज का निकाल लेंगे। निकालिए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज?
मरियम, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है? नो सर, इस लास्ट वाले का। अच्छा, सही है, सही है। इसका कैलकुलेट कीजिए, मैग्नीज का, यहाँ पे भी मैग्नीज का, ठीक है। Now remember, now the overall charge is not zero, it is equal to -1, the overall charge. So यहाँ पे आपके पास जो भी इक्वेशन लिखिएगा ना, तो equal to -1 आएगा वहां पे, okay? Don't forget doing that. चलिए मरियम, turn your mic on. यस सर। पोटेशियम के लिए कितना होगा बताइए? 2। क्यों 2 होगा? ग्रुप 1 में है ना भाई। अच्छा सर, पोटाश, अच्छा 1। +1 बोलिए। यस, +1। हाँ, मैग्नीज के लिए क्या लेंगे हम लोग? X। X। ऑक्सीजन के लिए क्या होगा बताइए? 4 into -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 + x - 4 into -2 will be equal to -8 will be equal to 0. तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, -8 + 1, x - 7 is equal to 0, x is equal to +7, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, mn is equal to x, समझ में आया नहीं आया? हाँ मरियम, Yes sir, did you get actually this? yes, I did a mistake in the calculation. आंसर तो गलत आया ना, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए लेकिन, है ना? जी मतलब सर। बहुत सिंपल सब्ट्रैक्शन और एडिशन, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, बिल्कुल सिंपल केस है। ओके, x यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से, 4 into -2 is equal to -1 is equal to -1, x - 8 is equal to -1। अब ये 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x is equal to 8 - 1 which is equal to 7। यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। लिख लिया? Yes, sir. चलिए, we had a question, सवाल था हमारे पास। ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3, ठीक है, फ्रॉम Al2O3। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मोल्स एंड यू हैव टू राइट द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ मोल्स। सो राइट द आंसर एज, फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम है ना, तो एल्यूमिनियम का आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू 54 ग्राम्स
divided by 27 grams per mole, which is the molar mass of aluminium, which will be equal to 2 moles. ठीक है, तो ग्राम ग्राम cancel out, mole inverse will go above, it will become 2 mole. Okay, now what we will write, 2 mole of aluminium from Al2O3. तो यहाँ पे लिखिए Al2O3 से क्या बनाना है आपको, you have to get 2 moles of aluminium. You have to get how many moles of aluminium? 2 moles of aluminium. You have to get 2 moles of aluminium. अब देखिए Al2 में आपके पास what is the oxidation state of aluminium? It is +3, है ना? Yes, sir. Yes or no? It is +3. Now +3 से आपको कहाँ जाना है? 0 में, right? And you have 2 aluminium. That means how many electrons will be used? Number of electrons कितने हो जाएंगे? For each aluminium it is +3. Each aluminium has to go to 0, right? And there are 2 aluminiums. So total number of electrons that will be consumed is equal to how much? 2. एक एल्यूमिनियम के लिए कितना इस्तेमाल होगा बताइए? If I have to go from +3 to 0, कितने इलेक्ट्रॉन्स खिलाएं तो 0 हो जाएगा? How many electrons should +3 be given so it will become 0? 3. 3 electrons, है ना? तो for each aluminium we require 3 electrons. तो 2 एल्यूमिनियम के लिए कितना इस्तेमाल होगा बताइए? 6. Fatima, did you get it? Yes or no? Yes, Fatima, are you there? Your mic is off, by the way. जवाब ही नहीं दीजिएगा तो हम कैसे पढ़ाएंगे? We need 6 electron. 6 electron यानी कि हमारे पास क्या हो जाएंगे? In Faraday's it will be equal to 6F. Q will be equal to 6 into F. फातिमा, अच्छा फातिमा को डिस्कनेक्ट. मरियम समझ में आया? Yes, sir. जल्दी लिखिए इसको. डन? फातिमा, 1 minute, समझ में आया नहीं आया आपको अब? Yes, sir. अच्छा ये बताइए, यहाँ पे ये जो 2 है किसकी वजह से है? इस ब्लू वाले 2 की वजह से है या रेड वाले 2 की वजह से है? रेड वाले 2 की वजह से. वेरी गुड. रेड वाला 2 कहाँ से आ रहा है? सवाल से आ रहा है ना? रेड वाला 2 कहाँ से आ रहा है? देखिए ये वाला 2 moles of aluminium is required. ठीक है, Yes, sir. बात समझ में आ गई? ओके. So I'm done. Thank you. डन, ठीक है. नेक्स्ट आपका देखिए क्या था सवाल था. 20 grams of calcium from calcium chloride. ठीक है, calcium from calcium chloride. सबसे पहले what we will do, convert this to mole. मोलर मास नहीं याद आप लोग को? फातिमा एंड मरियम, कैल्शियम का बताइए. नहीं सर. हाँ निकालिए, ढूंढ के निकालिए कहीं से भी मोलर मास. सर्च कीजिए, कुछ भी कीजिए. अब सारे सवाल आप ऐसे ही कीजिएगा, सर्च कर करके कीजिएगा. ठीक है, वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. हम नहीं बताने वाले अब, तभी याद होगा आप लोग को. इन 20 grams ऑफ कैल्शियम
is equal to given mass divided by molar mass. गिवन मास क्या है आपका वो लिखेगा, मोलर मास क्या है वो लिखेगा, दोनों को डिवाइड करके बताइए आंसर कितना आ रहा है। फातिमा करेक्ट। मरियम मोलर मास मिला आपको? नहीं मिला मरियम को। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स मरियम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। करेक्ट, चलिए बहुत बढ़िया। गिवन मास 20, मोलर मास 40 grams per mole. Grams and grams, 20 upon 40 will be equal to 0.5. ठीक है, now you have to prepare CaCl2. so आपको क्या बनाना है, कैल्शियम बनाना है। what is the oxidation state of calcium here, tell me? कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? फातिमा एंड मरियम, किसमें आता है कैल्शियम? ग्रुप 1 ग्रुप 2 किसमें आता है? what is the oxidation state of calcium here? Group 2. तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? 2 +2। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा that I have to make how much? I have to make 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए 0.5 मोल चाहिए हमें, है ना। नाउ yes 1 कैल्शियम नीड्स डैश इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए एक कैल्शियम को? 1 कैल्शियम ट्रूपलेट्स नीड्स डैश इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैल्शियम सॉलिड। न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई? एक कैल्शियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 कैल्शियम ट्रूपलेट्स को? अभी तक पैटर्न समझ में नहीं आया क्या आप लोगों को? जल्दी बताइए फातिमा मरियम। two electrons क्या हो गया मरियम, नहीं समझ में आ रहा क्या आपको? No, sir. नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, what is the difference between these two? Mariam, keep your mic on. This is charged, yes or no? The first one is charged, the second one is neutral. It will be solid calcium metal hoga, right? Now Yes. you tell me, if I have 1 calcium 2 positive, then it will need electron to neutralize. Positive charge है तो negative charge देंगे. The electron has negative charge, yes or no? Yes. So how many electrons should I give? 2. 2. ठीक है. So 1 calcium 2 plus needs 2 electron. 0.5 calcium 2 plus needs dash electron to form 0.5 moles of calcium। बताइए कितना इलेक्ट्रॉन लगे? How many electrons? एक में 2 लगता है, आधे में कितना लगेगा? 1 requires 2, half will require 1.5. मेथड है ये तो। Can't hear you मरियम। 1.5.
फातिमा टेल मी। अरे भाई क्या हो गया आप लोग को? लिसन, एक क्लास 2 चॉकलेट खाती है, आधी क्लास कितनी चॉकलेट खाएगी? 1 क्लास ईट्स 2 chocolates, हाफ क्लास विल ईट हाउ मेनी चॉकलेट्स? अरे व्हाट One हैपेंड फातिमा? electron. मरियम, Sir, one मरियम व्हाट electron. अबाउट? ओके मरियम, व्हाट अबाउट यू? गॉड, मतलब आप रिप्लाई नहीं कीजिएगा, क्या हो गया? नेटवर्क सही नहीं है क्या आपका? यस मरियम। चैट से ना नहीं हो पाएगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसे बात समझ में आएगी नहीं है, कैसे पता चलेगा इससे? यू कांट टर्न दी माइक ऑन। यस मरियम। सर अब सुनाई दे रहा है? हाँ अब सुनाई दे रहा है। आप कोशिश कीजिए कि माइक ऑन करें, ठीक है ना, तो वो सिंक्रोनस रहता है ना। यस सर। अब ये बताइए, हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं मरियम। इफ आई हैव 5 कैल्शियम 2 प्लस needs dash electron to form 5 moles of calcium, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेंगे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू वी रिक्वायर? 10. अरे आपसे तो नहीं पूछा ना हमने, मरियम से पूछ रहे हो। मरियम आपको नहीं आया, एक बार में नहीं नहीं आया सर, ना ये जवाब? नहीं अब समझ में आया। आई गॉट इट। नहीं नहीं नहीं, आपको ये जवाब नहीं आया एक बार में ना, या आप समझ नहीं में आ गया सब कुछ? नहीं। यस। यूनिटरी मेथड याद है आपको कुछ कि नहीं याद है? एक का निकाल लीजिए आप, एक कैल्शियम को कितना जरूरत पड़ता है 0.5 के लिए, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको 5 चाहिए, अब ये बताइए मरियम, you will tell, okay? Needs dash electron to form 5 honey to form 100 calcium, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 200। ठीक है, खैर ये हमारा एरिया नहीं था। ठीक है, मोल्स की अगर हम बात करें ना, प्लीज रिमेंबर ये जो सारी कुछ हो रहा है ना, ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग विद मोल्स ओनली, ओके? सो व्हेन आई राइट 1, दिस इज 1 mole of Ca2 plus needs 2 moles of electron to form 1 mole of calcium 2 plus, 0.5 moles of Ca2 plus। यहाँ पे जो चार्ज रिक्वायर्ड होगा, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1 फैराडे। ठीक है, 1 फैराडे। जल्दी लिखिए इसको। डन। यस सर। सवाल लिखिए। क्वेश्चन इज, सवाल क्या था हमारा? 1 मोल ऑफ MnO4 negative to Mn2 plus Mn plus 2, ठीक है? So now here you have already with moles, so you can directly write the equation, okay? Equation क्या है आपके पास? MnO4 negative से कहाँ जाना है? Mn plus 2. What is the oxidation state of Mn here? What is the oxidation state of Mn here? निकाला था ना आप लोगों ने तो, कॉपी में 7 देख के बताइए। 7, क्या 7? +7, प्लस ठीक है? 7। +7 से +2 जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? +7 से +2 जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 14। एकदम नहीं मरियम, आप माइक ऑन करके रखिए मरियम। आप ये बताइए,
5 आपको कितने electrons. मरियम आप कैसे सोच रही हैं ये बताइए, आपको क्या लगता है क्या हो रहा है यहाँ पे? 7 चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है 7 आपके पास, आप उस पे एक नेगेटिव चार्ज डालिएगा तो कितना हो जाएगा? इस मरियम टेल मी। Sir, see, I thought it was 7 into 2. 7 into 2 मतलब हम पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। अब देखिए, अब यही है कि ना, हम सवाल चेंज कर रहे हैं, अब ये सवाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं पे सारा केस है। अगर हम एक मोल को यहाँ पे कन्वर्ट किया, वी जस्ट नीड 1 मोल ऑफ Mn+2, राइट, 1 मोल ऑफ Mn+2। यहाँ से आपके पास चार्ज ट्रांसफर कितना हो गया? वी नीड 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना फैराडे हो जाएगा? 5 फैराडे। सवाल यहीं पैसे में खत्म हो जाता है, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन एनी मोर, आई विल डू अनदर क्वेश्चन। मरियम आप बताइएगा, ओके। 1 मोल ऑफ FeO, 2 Fe2O3, FeO से Fe2O3, what is the oxidation state of FeO? 2 plus 2. +2. What is the oxidation state of Fe2O3? क्या बताइए? Fe2O3 फातिमा, अगर आपका आंसर आ जाए व्हाट इज ऑक्सीजन स्टेट तो चैट में बताइएगा, ओके। किसका बता रही हैं आप फातिमा? FeO का, Fe2O3 का? Fe2O3. कैलकुलेट किया है आपने? नहीं. तो क्यों भाई, आज सीखा है रेडॉक्स रिएक्शन, आज ही PhD हो गई है क्या? कैलकुलेट कीजिए। मरियम, यू आर कैलकुलेटिंग? Yes, sir. जी। Plus 3. करेक्ट। अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? 1 electron. 1 इलेक्ट्रॉन है ना, और कितना मोल चाहिए हमको? 1. तो कितना हो जाएगा? 1 1 Faraday. फैराडे। समझ में आई बात? Yes, sir. सवाल लिखिए। वन मोल ऑफ H2O, 2O2, ठीक है, 1 मोल ऑफ H2O, 2O2। यहाँ पे क्या हो रहा है? H2O से क्या चाहिए? O2। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन हियर? H2O में कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -2. फातिमा, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई पहले वाला हुआ फातिमा? Yes, sir. +3 आया कैलकुलेट करने पे? Yes, sir. सेकंड वाले में देखिए, ऑक्सीजन का तो क्या, ऑक्सीजन का है तो इट विल बी व्हाट, -2। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा? हाँ देखिए, भूल गए, भूल गए, अभी पढ़ा है, अभी भूल गए। -2. -2 भी होगा। एटम्स इन एलिमेंटल फॉर्म ऑलवेज हैव ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। बादाम खाइए आप लोग, बादाम। कितना होगा? 0.
-2 मार्क्स मिल जाएगा आपको। ये बताइए कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है? 2 electrons. है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। फिर आप ये देख लीजिए डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है ना, यस और नो? Yes, sir. तो कितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन स्टेट में चेंज है हमारे पास 2 का, इनटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू हाउ मच? 2, इट विल बी इक्वल टू 4. अब लिखिए सेकंड लॉ। When same charge is passing through different electrolyte, then the mass deposited at electrode is directly proportional to equivalent weight. लिखिए आप लोगों ने ये सब नोटिस सलमी? Yes, Yes, sir. sir. तो नेक्स्ट सवाल लिखिए। देखिए सवाल लिखिए, 3 electrolytic cell A, B, C containing ZnSO4, CuSO4 and AgNO3 connected in series. Next, the current of
the current of 1.5 ampere is passing through the solution, is passed through the solution, passed through the solution until mm, 1.45 grams of Ag is deposited at electrode number 1. How long did the flow? ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं. फातिमा एंड मरियम, राइट दिस डाउन. टेंशन मत लीजिए, सवाल देख के ऐसे ही लगता है कि हमको क्या पता कितने देर चला, जितने देर चलाया हुआ उतने देर चला होगा, हमको क्या पता. राइट नाउ बोथ ऑफ यू आर फीलिंग द सेम थिंग, यस और नो? यस फातिमा एंड मरियम. यस सर. हाँ, तो केमिस्ट्री के सवाल ऐसे ही रहते हैं सर, सब कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो बता दीजिए, ऐसे कैसे पता लगा ले आप. देखिए, this is where theory is very strong in chemistry. Theory is very strong in chemistry. Like situations जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो कि like I don't know what answer I'm going to write. अब यहाँ से धीरे-धीरे एनालाइज करते हैं. What do we know here? We know that the current is flowing of 1.5 angstrom. Okay, 1.5 angstrom and Ag is formed. कितना Ag मिला है हमको? 1.45 ग्राम Ag मिला है. तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइए तो आप सोचिएगा, अच्छा एक सेकंड, हम पहले क्या कर रहे थे? I was calculating charge that is required to produce a certain amount of, that is required to deposit certain amount of metal. Yes or no? सही है? अरे हाँ या ना तो बोल दीजिए. चार्ज कैलकुलेट कर रहे थे ना इससे पहले हम लोग, कर रहे थे, ये आता है आप लोग को, है ना? You all know this thing. अच्छा, अब what is charge? चार्ज होता है आपके पास, चार्ज इज, व्हाट इज चार्ज? Q is equal to I into T. सही है? Yes or no? Yes, sir. ठीक है. अब देखिए, अब हमारे पास क्या है? I है, T है और अमाउंट ऑफ मेटल. अब यहीं से आप देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है. यू हैव बीन गिवन I, you have been given amount of metal and you just need time. Yes or no? I hope all of you can see this. Yes sir. Yes, sir. आप दिख रहा है? अब make sense a bit? Yes or no? Tell me. Yes, sir. ठीक है. अब ध्यान देखते हैं, जो चीज हम लोगों ने, जैसे हम लोग अब पहले हम लोग फॉरवर्ड जा रहे थे, अब बैकवर्ड आ जाना है. राइट? So what you have to go? You have to go backward. You have to go backward now. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसकी वजह से? We have to write the equation. What we have to write? Equation. So here we have AgNO3. AgNO3. AgNO3 से आपको क्या चाहिए? Ag चाहिए. अच्छा, उससे पहले वेट अ सेकंड, हम अमाउंट पे हम लोग नहीं खेल रहे थे, प्लेइंग विथ मोल्स. तो हम लोग पहले मोल्स में कन्वर्ट करते हैं कि जो भी हम लोग को अमाउंट दिया हुआ ना, सो विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट. ठीक है, सो 1.45 ग्राम दिया हुआ है, सो विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 1.45 grams of Ag is equal to 1.45 grams. चलिए बताइए कितना होता है सिल्वर का मोलर मास? सर्च करके बताइए, यू हैव ऑप्शंस, है ना? कैसे भी करके आप बताइए, ढूंढ ढांड के कहीं से भी.
नहीं नहीं मरियम, ठीक से देखिए, एक बार ठीक से देखिए, उसके बाद बताइए फिर से। मरियम, जहां पे भी आपने देखा ना वहां पे फिर से देखिए, देन टेल मी द आंसर। फातिमा आपका सही है। सेम आंसर मरियम, कोई चेंज नहीं है। यस मरियम। यस सर। नहीं, क्या है बताइए, जो भी आप देख रहे हैं रीड कीजिए एक बार, क्या दिया हुआ है। 107.86। आप बताइए क्या हो जाएगा मोलर मास। राउंड कीजिए ना, कितना हो जाएगा मरियम। अरे ये मत बोलिए कि आपको राउंड अप करने नहीं आता मरियम, यू नो हाउ टू राउंड अप, यस और नो। अच्छा देखिए देखिए देखिए, हाँ तो फिर वन, हाँ ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, नहीं नहीं फातिमा वो नहीं करना था, 108 grams per mole, right? So this will be equal to how much, 1.45 divided by 108 moles. अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, okay? Just keep it here like this. We have got the number of moles now. We have got the number of moles. अब लिख लेते हैं equation. AgNO3 से Ag. I have to go from AgNO3 to Ag. Okay? And how much Ag? 1.45 upon 108. ठीक है, तो अब अभी तक यहाँ पे बस हम लोग इलेक्ट्रॉन से खेलना. We will talk about the electron. उसके बाद हम लोग डिवाइड कर लेंगे. So this many moles we need. Here the oxidation state of Ag is +1. यहाँ पे oxidation state है 0. So 1 mole of Ag needs 1 mole of electron. 1.45 upon 108 moles of Ag needs 1.45. आ रहा है कि नहीं आ रहा है फातिमा मरियम, टेल मी। यस सर। है ना, आ रहा है, राइट। अब बताइए, you have got the number of moles of electron. Now charge on 1.45. बेसिकली हम क्या यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे आपको ये करना है, this will be equal to this much, Q is equal to this much Faraday. 1.45 108 into 1 Faraday. What is 1 Faraday? 96500 कूलम. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को चार्ज निकालना है एग्जैक्ट टर्म्स में, बिकॉज चार्ज निकालना तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, तभी हम लोग Q इज इक्वल टू IT में मल्टीप्लाई कर पाएंगे. इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम वी वर जस्ट कैलकुलेटिंग द फैराडे, बिकॉज सवाल में हमने लिखा था calculate the charge required in terms of Faraday. Now here we are going to calculate the charge in terms of what? In terms of Coulomb. That is why what we are doing, we are multiplying this by 1.45 moles of electron is required, and in each mole 9650 coulombs of charge. So Q will be equal to 1.45 into 96500 divided by 108 coulomb. So this is the Q that I have got. This is the Q that I have got. Now we all know that Q is equal to the current into time. So time will be equal to how much? Time will be equal to the current, sorry, the charge upon current. T is equal to Q upon I. Q है आपके पास 1.45 into 96500 divided by 108 into 1.5. ठीक है, अब ये भी जो आएगा ना, all of this will be in seconds. Okay, all of this will come in seconds.
Okay, Mariam. इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए. It will be a bit less. Fatima, calculate once again. It will be obviously less than 1000. अरे नहीं नहीं, गलत आ रहा है आपका आंसर. It will be around 864 seconds. इस सेकंड्स आपका अब यहाँ पे एक और चीज देखिए. नाउ Q is equal to I into T. I is equal to 1.5. 1.5 ampere into 864. So Q जो आपको मिलके आ रहा होगा, that will be equal to 1296 coulombs. ठीक है, this is the Q that you are going to get. So this is the coulombs in this is the charge in coulombs. Q in Faraday will be equal to 1296 upon 96500. ठीक है, Faraday. कितना चार्ज है हमारे पास? Now they're asking calculate the amount of copper and zinc deposited. Okay, कितना डिपॉजिट होगा? तो देखिए, कॉपर है आपके पास CuSO4 में 2+. will eat up 2 electron and it will give me 1 copper. तो एक कॉपर का जो मोलर मास होता है, the molar mass of copper is equal to
63.5. Okay, 63.5 ग्राम. That means अगर हमारे पास 2 फैराडे होगा, then I will get 63.5, है ना? If I will have 1 Faraday, I will be getting 63.5 divided by 2. Okay, but how many Faraday do we have? We have 1296 divided by 96500 Faraday. This will give me 63.5 into 1296 upon 2 into 96500 grams of copper. Tell me अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आए, 1, 2, 3 and 4. Fatima and Mariam. Yes, sir. What about Mariam? Sir, I didn't understand the part like 2 Faraday where we got 63.5 gram. अच्छा अच्छा. 2 जब हमारे पास 1 मोल ऑफ कॉपर 2 प्लस है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट मरियम? Yes. एंड वी आर गेटिंग 1 मोल ऑफ कॉपर. Yes, sir. तो 1 मोल ऑफ कॉपर का मोलर मास इतना होता है. Okay, okay. ठीक है, ओके, अब आ गया समझ में? Yes. ओके, अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? कॉपर का मास मिल जाएगा. द ओनली थिंग दैट विल चेंज हियर इज, देखिए, एवरीथिंग विल बी सेम. जो जिंक के लिए हमारे पास कितना है? जिंक के लिए है Zn2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन विल गिव मी जिंक. यानी कि यहाँ पे भी 2 फैराडे आपको क्या देगा? इट विल गिव यू 1 मोल ऑफ जिंक. इट विल गिव यू 1 मोल ऑफ जिंक, एंड जिंक का 1 मोल का जो मास होता है दैट इज इक्वल टू 65 ग्राम्स. 1 फैराडे विल गिव मी 65/2 grams. और हमारे पास कितना फैराडे है? वी हैव 1296 divided by 96500 Faradays. This will give me 65 into 1296 upon 2 into 96500 grams of zinc. Okay, so write these things down. Done, Fatima and Mariam. Yes, sir. ठीक है, अब देखिए Yes, sir. आप देखिए, now whatever is remaining is कमर्शियल सेल, या फिर जिसको हम बैटरी बोलते हैं. ओके, सो इन बैटरीज वी हैव प्राइमरली 3 कैटेगरीज ऑफ बैटरी वी हैव. तो प्राइमरी सेल होता है, सेकेंडरी सेल होता है, फ्यूल सेल होता है. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फ्यूल. ओके, सो थोड़ा सा पार्ट है, एंड ऑल ऑफ दिस इज completely theoretical. So what I will do here is I will give you notes. ठीक है, so hopefully before next class आपकी कब होगी? ट्यूसडे को ना. so before Tuesday you will be getting notes, okay, for commercial cell, battery में primary, secondary and fuel cell के लिए, okay, and also accompanied with a video. Sir, next class is on Monday, right? हाँ, sorry, my bad, Monday. ठीक है, नोट्स और आपको उसके साथ में क्या मिलेगा? वीडियो मिलेगा, इन विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग द नोट्स. ठीक है, आप उससे नोट्स बना लीजिएगा खुद के लिए. इन योर कॉपी यू विल राइट इट डाउन. ओके फातिमा एंड मरियम. Okay, sir. ठीक है, Yes, बिकॉज sir. इसमें देखिए, सबसे पहली बात, इसमें आपके पास ना कोई भी ये नहीं होता, न्यूमेरिकल्स नहीं आते बिल्कुल भी. ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पे जो कुछ भी आप सीखिएगा ये कहीं और आपको काम नहीं आने वाला है, राइट? सो व्हाट, बिकॉज दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, दिस इज द एप्लीकेशन हियर. सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फैक्ट्स. अब जैसे जिंक होता है, तो जिंक क्यों यूज करते हैं हम?
देन जो NH3 गैस बनता है तो NH3 गैस का क्या होता है फिर। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी थियोरेटिकल, तो उसको हम नोट्स के साथ साथ वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, एंड ऑन मंडे स्टार्ट होगा आपका केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ये सुनो। Yes, sir. ठीक है, ऑल्सो एक और चीज बिफोर मंडे, you will get previous year questions of boards.